your page number 50, raw materials. Any matter which is in a natural state, कोई भी चीज़ जो कि naturally हो and is not man made is a raw material. इंसान की बनाई हुई ना हो वो raw material है. They can be plants or animals, जैसे कि plants हैं और plants और minerals हैं, यानी कि पौधे और मादनियात. Some raw materials such as plants and wood and some types of rocks are found on the earth's surface. बहुत से raw material ज़मीन पर नज़र आते हैं, जैसे कि plants हैं, wood हैं और बहुत सी rocks हैं, चट्टानें हैं. Minerals क्या हैं, मादनियात क्या हैं? There are metallic minerals such as iron ore, copper, gold and silver. और ये देखिए आपके पेज पर बहुत से मिनरल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि कुदरती हैं और ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं. नेक्स्ट आपका पेज है पेज 51. पाकिस्तान डज़ नॉट हैव मैनी मेटेलिक मिनरल्स. क्रोमाइट, आयरन और कॉपर एंड मैग्नीज आर सम ऑफ द metallic minerals found here in various quantities. However, there is a good supply of non-metallic minerals like rock salt, gypsum, limestone, soapstone, sulfur and marble. A variety of gemstones is also mined. There are non-metallic minerals such as salt and precious stones like diamonds, emeralds and rubies. Now your page number 52. This is your work page. Mention the date on this page. Look at your part A. Look in a dictionary or encyclopedia and found out some more about these things. इनके meanings लिखें आप. Reservoir, a large natural and artificial lake used as a source of water. A large natural and an artificial lake used as a source of water. Glacier, a river of ice. Dam, a barrier that stops the flow of water. Barrage, a barrier across a river to prevent flooding. Resource, a supply of materials. Canal, an artificial waterways to supply water. Hydroelectricity, electricity produced by generator. Turbine, a machine for producing continuous power. Generator, production or creation of something. Now your B part. आपने क्या करना है, लेबल द डायग्राम. ये आपने खुद से करना है. बी पार्ट आपका पेज नंबर 52 पर जो बी पार्ट है उसकी लेबलिंग आपने खुद करनी है.